Hello everyone. Hello everyone. Am I visible and audible? Please confirm. Please confirm my audibility and the screen visibility. Good morning everybody. How are you doing? All dear friends. Have you done the homework questions? Please respond everybody. When you respond, then only I will be knowing, right? Good morning Varma. Good morning Shivani. Okay, right. So, we are in the second lecture of this data structures through Python subject. In the last class, we have discussed about data structures and their classification, stack and operations on stack, applications of stack, among them expression conversion and expression evaluation. These two applications we have kept like discussed little detailed along with examples, and I have given couple of homework questions. So today let us solve those homework questions first, and then we will understand what is queue, what are different types of queues, operations on queues, and then we will focus on the types of queues, then hashing, hash tables, collision resolution techniques. Okay. So, Nabin, Adarsh, Vamshi, Krishna, everyone, once again, very good morning, warm welcome to the session. Let us look at the homework question first. This is the first homework question. What is your answer? Evaluate the postfix expression. Please check once, is this the same that I have given to you? If any corrections, please let me know, or else give your answer for this. $138. Everyone got the same? Everyone got the same? All right. Let's see. To evaluate the postfix expression, we will scan from left to right. If the scanned element is an operand,
we will push on to the stack. So 12 operand, 5 operand, 7 operand, 9 operand, 3 operand. Now operator means we will pop the first two operands, perform the operation among them. So 9 minus 3 is 6. Then multiplication, 7 multiplied by 6, that is 42. Then plus 5 plus 42, that is 47. And then star, that is 12 multiplied by 47. So I am not expanding it or calculating it, let it be. And then we have got operand 4. Operand 4. Now slash. So 12 multiplied by 47 divided by 4 will be, 4 goes 3 times. So it is 3 sevens are 21, 3 fours are 12 plus 2. So it is 141. And then we got 3, and now minus 141 minus 3, that would be 138. Pop the result. So 138 is the result. Everyone, whoever have already solved it, very good. अगर किसको भी ये समझ में नहीं आए सॉल्व करने के लिए, एटलीस्ट आप ये सॉल्यूशन देख लेना, कहाँ आप मिस्टेक किए खुद चेक करना, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया था कल, और एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था, कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन सो एंड सो टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। क्या इसका जवाब क्या है? पहले ये इनफिक्स एक्सप्रेशन सही या नहीं एक बार चेक करना, यही दिया या नहीं एक बार चेक करना, चेक करके आपका जवाब दे देना। कन्वर्ट दिस इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। एवरीवन फटाफट से करना बेटा। What is the postfix expression of this? Shivani, have you solved it? Whoever have solved it, please give your answer in the chat box. Okay, let me do it. Scan the expression from left to right, one element at a time. Let this is an empty stack. And the resultant postfix expression, let it be y. So first parentheses are there. We will push on to the stack. Operand add to y plus q, right parenthesis. That means we will pop
and ignore the parenthesis, then minus, and then again we have got left parenthesis or exponentiation, left parenthesis, yes, slash t. Now I have got star. Slash has equal priority. So we pop this slash and push star and then u. Now right parenthesis I have got. So I pop star and ignore the parenthesis. Now slash, exponentiation has more priority. So when the top has more priority or equal priority, we will pop and push the scanned element. Now we have V. Now right parenthesis means we will pop and ignore the parenthesis. Now minus. Minus, here also we have minus. Both have equal priority. So we will pop this minus and push this new minus and then W. Now right parenthesis. So until the first left parenthesis, we will ignore, we will pop and ignore the brackets, and now plus X. Now right parenthesis. So you will pop this plus and eliminate it. Eliminate the parenthesis. Make the stack empty. Of course, the stack is empty. So the resultant postfix expression is this. Please check yourself. Please check yourself. How many of you have done it correct? How many of you have done it correct? Verma did it correct. Okay. Very good. Only Vashani Verma has done it correct. Shivani, what about you? Adarsh Agarwal, Vamshi Krishna, everyone else? All right. No issue, beta. No issue. Let us proceed to the queue data structure. So stack data structure से ये दो applications very important है. हमको गेट एग्जाम में frequently asked टॉपिक ये दो है. एक कन्वर्टिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन और दूसरा इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन. तो ध्यान रखना बेटा. ओके. और ये पुश पॉप ऑपरेशन सीक्वेंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. मतलब इसको पुश किया, पॉप किया, पुश 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 पॉप, सो फाइनली व्हाट इज द आउटपुट करके ऐसा भी पूछा जाता है. तो आप थोड़ा ध्यान रख के आराम से उसको कर सकते. नाउ आई एम मूविंग ऑन टू अनदर डेटा स्ट्रक्चर दैट इज क्यू. So what is this queue data structure? It is also a linear data structure in which insertion and deletion of elements performed
from different ends of the system or from different ends of the list. A linear data structure in which insertion is done from one end and deletion is done from the other end is known as queue data structure. What are those two ends? Usually, insertion is done from an end called rear end and deletion is done from an end called front end. Insertion end is called rear end and deletion end is called front end. So we will represent queue like this. Suppose this is the queue. Insert from an end called rear end, delete from an end called front end. This is just like a regular queue that you see at any ticketing counter, like you see movie ticket counter, bus ticket counter or train ticket counter or flight ticket counter or in the airport check-in queue or boarding queue into the flight or in your college. Whenever you people assemble in the auditorium or somewhere, you might be going in a queue. Same way, the queue you see at ATM centers. So the regular queue is what? The one who comes new will be added at the rear end. The one who finish up, who will move out of the queue from the front end. Right? So this is like a regular queue. So ये हम कह सकते हैं सिंपल क्यू, सिंपल क्यू में ऐसा रेयर एंड से इंसर्शन होते, फ्रंट एंड से डिलीशन होते. अच्छा, सो सिंपल क्यू में ही ऐसा होते क्या? और एक क्यू में भी ऐसी रेयर एंड फ्रंट एंड से ही इंसर्शन डिलीशन होते, बट नॉट फ्रॉम एवरी टाइप ऑफ क्यू. व्हाट डज दैट मीन? अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा. अभी फिलहाल के लिए आप ये याद रखो, सिंपल क्यू में इंसर्शन रेयर एंड से होते, डिलीशन फ्रंट एंड से होते. ठीक है. ऑन in queue data structure or in queue implementation, insertion operation is termed as NQ operation. इंसर्शन ऑपरेशन को क्या बोल के बुलाते? NQ ऑपरेशन. And deletion operation is termed as DQ operation. डिलीशन ऑपरेशन को क्या बोल के हम कहते हैं? DQ ऑपरेशन. दिस इज द टर्मिनोलॉजी वी यूज. NQ, DQ. स्टैक में पुश पॉप, वैसी क्यू में NQ, DQ. ओके. नाउ what are different types of queues? There are basically 4 types of queues. What are different types of queues? We can say 4 types of queues. What are they?
simple queue, circular queue, double-ended queue, and priority queue. Simple queue, circular queue, double-ended queue, priority queue. These are the 4 types of queues we have. Now, in this, in simple queue and circular queue, insertion is done from rear end. Insertion is done from rear end and deletion is done from front end. Okay. So we can say these two are first in, first out type of lists. First in, first out. That is FIFO lists. So simple queue and circular queue you can say as FIFO, first in, first out, because you insert from one end and delete from the other end. Who inserts first, that gets deleted first. So in the insertion sequence, deletion also happen. That's why you can say these two types of queues as FIFO lists. But double-ended queue, this is what in short we call as deque. यूजुअली हम इसको भी डी क्यू करके बुलाते, लेकिन वो रॉन्ग है. इसको डेक बोल के कहना. डी क्यू मतलब ऑपरेशन है, डेक मतलब टाइप ऑफ क्यू, डबल एंडेड क्यू है वो. ठीक है, डबल एंडेड क्यू. So in double ended queue you can do insertion from both the ends. Same way, deletion also from both the ends. Deletion also from both the ends. Insertion, deletion, both you can do from both the ends. So, if this is the queue, you will be able to insert as well as delete from the front end and insert and delete from the rear end. So, will it be always first in, first out list means? We cannot say. From which end you insert and from which end you delete, based on that, whether it is going to be FIFO or LIFO depends. So deque can be used as both FIFO list and LIFO list. इसीलिए हम इसको प्योर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट बोल के नहीं कह सकते. किसको? डबल एंडेड क्यू को, डेक को.
सिर्फ सिंपल क्यू सर्क्यूलर क्यू को ही हम FIFO लिस्ट बोल के कह सकते, वो 100% एप्ट टाइप्स ऑफ क्यूज है FIFO के लिए। लेकिन डेक में FIFO या लिफो कौन सा ऑर्डर में भी ऑपरेशन हो सकते, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी क्यू क्या है सर, ये एकदम स्पेशल टाइप ऑफ क्यू है। इन प्रायोरिटी क्यू डिलीशन इज नॉट डन, डिलीशन इज नॉट परफॉर्म्ड in the insertion sequence. इंसर्शन ऑर्डर पे डिलीशन नहीं होते तो, बट बेस्ड ऑन प्रायोरिटी डिलीशन इज डन, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी डिलीशन इज डन। मतलब लेट इंसर्टेड एलिमेंट को हाई प्रायोरिटी है तो वो डिलीट होते, मिडिल इंसर्टेड एलिमेंट को लो प्रायोरिटी है तो वो लास्ट में डिलीट होते, फर्स्ट इंसर्टेड एलिमेंट को लास्ट प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी है तो वो लास्ट में डिलीट कर सकते। सो वो डिलीशन सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस में इंसर्शन हुआ वो सीक्वेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसा सिंपल क्यू सर्क्यूलर क्यू में हम करते इंसर्शन ऑर्डर में ही डिलीशन, प्रायोरिटी क्यू में ऐसा नहीं होते। इंसर्शन रेयर एंड से ही होते, डिलीशन फ्रंट एंड से ही होते, वो तो एंड्स तो सेम है, लेकिन कौन सा एलिमेंट इंसर्ट डिलीट होते वो प्योरली प्रायोरिटी के ऊपर रहते बेटा। सो इसीलिए हम इसको भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट बोल के नहीं कह सकते। फर्स्ट इन का लास्ट प्रायोरिटी है तो वो लास्ट आउट हो जाता, लास्ट इन का फर्स्ट प्रायोरिटी है तो वो फर्स्ट आउट हो जाता, मिडिल इन का फर्स्ट प्रायोरिटी है तो वो फर्स्ट आउट हो जाते। सो हम ये नहीं कह सकते ये प्रायोरिटी क्यू का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, नहीं कह सकते। प्योरली ये प्रायोरिटी के बेसिस पे होते। ये प्रायोरिटी कौन डिसाइड करते हैं सर, ये तो प्री डिफाइंड वैल्यू है या पहले से हमको मिलेगा, पहले से हमको मिलेगा ये एलिमेंट का प्रायोरिटी ये है बोल के, अगर इंप्लीमेंट करना है तो, या यूजर देगा, ठीक है। सो दीज आर व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूज। अब हम सिंपल क्यू के बारे में बात करते से पहले सब लोग एक बार कंफर्मेशन देना, यहां तक क्लियर है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गया। एम आई क्लियर सो फार, प्लीज रेस्पॉन्ड। I want response from everyone, please. Okay. All right. Now, if we talk about simple queue, what is this simple queue? In this queue, insertion happens from rear end, deletion happens from front end. So, how we do that NQ operation? So, if we define this NQ,
let's say q be the let q is equal to empty q of size 5. So let max size is equal to 5. Initially it is empty. Now when the q is empty initially, front will be, rear will be -1. फ्रंट विल बी, रेयर विल बी -1. सो अब मैं NQ ऑपरेशन करना चाहता हूं. जब मैं इंसर्ट करना चाहता हूं तब क्या हम चेक करना, पहले Q में स्पेस है या नहीं बोल के चेक करना. अगर Q फुल है तो हाउ वी विल बी एबल टू इंसर्ट, राइट. सो वी शुड मेक श्योर Q इज नॉट फुल while insertion. कैसा हम चेक कर पाते हैं, ये सम कंडीशन, वो कंडीशन क्या है हमको अभी पता नहीं, ठीक है, अभी क्लैरिटी नहीं, रहने दो. सो अपॉन सर्टेन कंडीशन हमको ये पता है Q इज फुल करके, इसको हम कह सकते ओवरफ्लो. ओवरफ्लो है तो हम इंसर्शन नहीं कर सकते, सो रिटर्न. नहीं तो हम कौन सा एंड से इंसर्शन करना, रेयर एंड से इंसर्शन करना होता. सो हम क्या करेंगे, रेयर को रेयर +1 करके Q ऑफ रेयर को वैल्यू पे डालेंगे. अब देखो, जब मैं एक वैल्यू इंसर्ट करता हूं तब वो वैल्यू तो रहेगा Q में. अगर मेरे को तब डिलीट करना है तो एक वैल्यू इंसर्शन के बाद वो वैल्यू तो है, इंसर्टेड वैल्यू तो है डिलीट करने के लिए, लेकिन डिलीशन हम कौन सा एंड से करते हैं. मान लो मैं 10 को इंसर्ट किया रेयर को 0 करके, अब 10 तो है ना, अब मैं डिलीट करना चाहे तो 10 तो डिलीट कर सकता हूं, लेकिन डिलीशन कौन सा एंड से मैं करता हूं, फ्रंट एंड से. लेकिन मैं रेयर को ही इंक्रीमेंट किया था, फ्रंट को नहीं. तो फर्स्ट इंसर्शन पे हम ये चेक करना पड़ेगा, इफ फ्रंट इज इक्वल टू 1 -1, इसका मतलब अब इंसर्ट किए सो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है, तो हम फ्रंट को फ्रंट +1 करो या फ्रंट को 0 करो, कुछ भी करो. सो ये हम हैंडल करना, ठीक है. ऐसा आप इंसर्ट करते जा रहे, 10 इंसर्शन पे R वैल्यू 0 हो गया, फ्रंट भी 0 हो गया. 20 को इंसर्ट किया R को 1 करके, R को 2 करके 30 को इंसर्ट किया, R को 3 करके 40 को इंसर्ट किया, R को 4 करके 50 को इंसर्ट किया. अब Q फुल हो गया. अगर मैं अब और एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूं, मेरे को Q फुल बोल के आना है, तो कैसा हम चेक कर पा रहे Q फुल है बोल के, जब रेयर साइज -1 हो गया तब हम कह सकते Q इज फुल बोल के, है ना. So you will be checking the overflow condition in a simple queue with this condition when rear is equal to size -1. स्पेसिफिकली मैं इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट क्यों आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि क्यू टॉपिक से हमको गेट एग्जाम में क्वेश्चन मोस्ट
expected model question is asking for these conditions. क्या कंडीशन से आप ओवरफ्लो चेक कर पाते, क्या कंडीशन से आप अंडरफ्लो या एम्प्टी को चेक कर पाते. इसीलिए मैं ये कंडीशंस मैं आपको जानकारी दे रहा हूं. ठीक है. सो दिस इज फॉर NQ. अच्छा ठीक है. अब मैं डिलीशन के बारे में बात करता हूं. deque from the queue. So when you will be able to delete an element, when some elements exist in the queue, one or the other, at least one element है तो आपको डिलीट करने के लिए कुछ तो है. अगर एम्प्टी क्यू से आपको डिलीट करने के लिए बोले तो क्या डिलीट कर पाते हैं आप? कुछ है डिलीट करने को एम्प्टी क्यू में? नहीं. इसीलिए while you delete हम ये चेक करना है क्यू एम्प्टी या नहीं. अगर क्यू एम्प्टी है तो you will not be able to delete anything. So इसको हम कह सकते अंडरफ्लो कंडीशन. अंडरफ्लो कंडीशन कौन सा कंडीशन से चेक कर रहे सर? अभी तो हमको क्लैरिटी नहीं, लिखते फिल करेंगे. सो अगर वो कंडीशन सैटिस्फाई हुआ, क्यू एम्प्टी है, आप डिलीट नहीं कर पाते. नहीं तो आप डिलीट कर पाते. लेट डिलीटेड एलिमेंट इज इक्वल टू, आप कौन सा एंड से डिलीट करते? फ्रंट एंड से. सो क्यू ऑफ फ्रंट, एक वैल्यू डिलीट हो चुका है तो फ्रंट आगे बढ़ेगा. फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1. तो आप देखो मैं डिलीट करना चाहता हूं 10 को. सो डिलीट किया, फ्रंट 0 से 1 हो गया. 20 को डिलीट किया, फ्रंट 2 हो गया. 30 को डिलीट किया, फ्रंट 3 हो गया. 40 को डिलीट किया, फ्रंट 4 हो गया. 50 को भी डिलीट किया. एज पर द प्रोग्राम फ्रंट क्या होगा? 50 को डिलीट किए तो 5. मतलब जब फ्रंट रेयर एक्सीड होके चले जाते, इसका मतलब है सारे एलिमेंट्स डिलीट हो चुका है. सो आप ऐसा डिलीट करके फ्रंट को इंक्रीमेंट करने के बाद ये चेक करो, इफ फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर और फ्रंट इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, इसका मतलब है आप सारे एलिमेंट्स डिलीट किया. क्यू फिर से एम्प्टी हो चुका है. तो एम्प्टी क्यू का फ्रंट रेयर क्या रहते? -1. तो अब आप एम्प्टी क्यू कैसा चेक करते? इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, क्यू इज एम्प्टी. सो ये कंडीशन से आप चेक कर पाते क्यू एम्प्टी है नहीं. सो ओवरफ्लो चेक करने के लिए रेयर इक्वल टू साइज -1, अंडरफ्लो चेक करने के लिए फ्रंट इक्वल टू -1. यहां आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लग रहा है? मैं एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूं, कैसा इंसर्ट कर पाऊंगा? पहले क्यू में है या नहीं चेक कर रहा हूं, तब इंसर्ट कर रहा हूं. सो चेक करने के लिए या असाइनमेंट के लिए या इंक्रीमेंट के लिए कितना टाइम लगेगा?
कांस्टेंट टाइम लगेगा। सो एक NQ ऑपरेशन के लिए कितना टाइम लेगा? कांस्टेंट। DQ ऑपरेशन का क्या हाल है? मैं कैसा डिलीट कर पा रहा हूं? पहले ये कंडीशन चेक कर रहा हूं, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं एम्प्टी बोल के प्रिंट करके रिटर्न करता हूं, नहीं तो डिलीट करके ये सारे ऑपरेशन कर लेता हूं। तो ये सब कांस्टेंट टाइम टेकिंग ऑपरेशंस है, कुछ लूप या रिकर्शन तो है नहीं। सो इसको भी कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा? कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहां तक क्लियर है बेटा? प्लीज रेस्पॉन्ड। Everyone, please respond. Okay. Now, having this simple queue, why do you require circular queue? Let us see. Let's say I am taking queue of size 5. Let size is equal to 5. Initially front will be, rear will be -1. Now I am doing NQ operation into this queue. Let's say 10. So what will be rear and what will be front? Rear 0 बनेगा, फ्रंट भी 0 बनेगा, 10 इंसर्ट होगा, है ना? रेयर फ्रंट 0 बनेगा. लेट मी इंसर्ट 20. तो फ्रंट OE होगा, रेयर इंक्रीमेंट होके इंसर्ट होगा. लाइक दिस I am inserting 30, 40, 50. सो रेयर 2 होके इंसर्ट होगा, रेयर 3 होके इंसर्ट होगा, रेयर 4 होके इंसर्ट होगा. सो फाइनली रेयर वैल्यू विल बी 4, फ्रंट वैल्यू विल बी 0, राइट?
Now let us suppose I perform deque operation from this Q. क्या होते हैं, 10 डिलीट होके फ्रंट 1 होगा, फिर से डीक्यू करो, 20 भी डिलीट होके फ्रंट 2 होगा. So final front is 2, rear is 4. Now if you try to insert one more element, आपका रेयर वैल्यू क्या है 4, फ्रंट वैल्यू क्या है 2. So as per the code, if rear is equal to size minus 1, Q is full. So it is checking rear is equal to size minus 1. रेयर तो 4 है, 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 1, ये तो ट्रू है. सो ये क्या करेगा, ओवरफ्लो बोल के प्रिंट करेगा, या Q इज फुल बोल के प्रिंट करेगा. बट एक्चुअली Q फुल है या नहीं, Q फुल नहीं, मैं ऑलरेडी 1020 को डिलीट किया था, सो ये जगह तो खाली पड़ा. लेकिन सिंपल क्यू का ड्रॉबैक ये हो गया, अगर मैं क्यू को फुल करता हूं एक बार, फिर से पूरा क्यू एम्प्टी करने तक आप दोबारा इंसर्शन नहीं कर पाते. सो once simple queue is full, until it is cleared completely, further insertion not allowed or not possible. बिकॉज वो कंडीशन आपको हमेशा क्यू फुल क्यू फुल क्यू फुल बोल के ही दे देते. अगर आप सारे एलिमेंट डिलीट किया था तब कैसा आप इंसर्ट कर पाओगे, सारे एलिमेंट डिलीट किए तो आप ये चेक कर रहे, लास्ट डिलीशन पे ये इफ कंडीशन ट्रू होते तब फ्रंट रेयर -1 करते. सो रेयर -1 हो रहे, मतलब वो ओवरफ्लो वाला इफ कंडीशन तब फॉल्स होते, तब आपको ओवरफ्लो बोल के प्रिंट नहीं होते, इंसर्शन करने देते. सो until complete queue is cleared, you will not be able to do further insertion. इसीलिए हमको मिले सर्क्युलर क्यू. Hence circular queue is what used. So ये सर्क्युलर क्यू क्या होते, ये सिंपल क्यू जैसा ही है, only difference is circular queue like simple queue only, it is like simple queue only, but rear and front update in circular or cyclic manner. क्या लिख रहा हूं, राइटिंग इतना खराब हो. in circular or cyclic manner. How? Front will be equal to
front plus 1 mod size, rear will be equal to rear plus 1 mod size. क्योंकि अगर आप लोगे मान लो ये है सर्क्यूलर क्यू, समझने के लिए मैं सर्किल जैसा लिखा था, इसका साइज है 5, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4. Initially front is equal to rear is equal to -1. Now whenever you are inserting, rear increment होते, so let's say I am inserting 10, so rear 0 होते, पहला इंसर्शन के लिए फ्रंट भी 0 कर लेते, 20 को इंसर्ट कर रहे तो रेयर 1 होगा, 30 को इंसर्ट कर रहे तो रेयर 2 होगा, 40 को इंसर्ट कर रहे रेयर 3 होगा, 50 को इंसर्ट कर रहे रेयर 4 होगा। अब तो सर्कुलर क्यू फुल हो चुका है, सो आप सर्कुलर क्यू में फुल वाला कंडीशन कैसा चेक कर पा रहे हैं? इफ फ्रंट इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड साइज, दैट इज द कंडीशन फॉर फुल। देखो रेयर प्लस 1, अभी 4 प्लस 1 मॉड साइज इज 5, 5 मॉड 5 इज 0, फ्रंट भी 0 है, सो जब फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड साइज, तब हम चेक बोल सकते हैं सर्कुलर क्यू फुल है बोल के। ठीक है, अब मान लो मैं 10 को डिलीट किया, अगर मैं इंसर्ट करना चाहता हूं, क्या मैं इंसर्ट कर पाता हूं? बिल्कुल, क्योंकि अभी ये जगह खाली हो गया। इंसर्ट करने के लिए रेयर को इंक्रीमेंट करना, हम रेयर को नॉर्मल इंक्रीमेंट किए तो 4 5 होगा, लेकिन 4 के बाद रेयर क्या होना? 0, सो 4 इंक्रीमेंट किए तो 0 कैसा होते हैं? मॉड्यूलो इंक्रीमेंट से होते, इसीलिए 4 प्लस 1 मॉड 5, 5 मॉड 5 0। ऐसा हम सर्कुलर क्यू में रेयर को और फ्रंट को क्या करना है? मॉड्यूलो इंक्रीमेंट करना है, सिंपल इंक्रीमेंट नहीं। क्यों? ये रेयर फ्रंट ऐसा साइक्लिक मोड में अपडेट होने के लिए। चलो मान लो मैं 10 को डिलीट किया, फ्रंट 0 से 1 बन गया, 20 को डिलीट किया, 1 से 2 बन गया, 30 को डिलीट किया, 2 से 3 बन गया, 40 को भी डिलीट किया, 3 से 4, 50 को भी डिलीट किया, 4 से 5 होगा, या 4 से 4 प्लस 1 मॉड साइज, 4 से 4 प्लस 1 मॉड साइज दैट इज 0 हो रहे। सो यहां हम ये करेंगे, डिलीट करने के बाद इफ, सो एम्प्टी के लिए हम ये चेक करेंगे, इफ फ्रंट इज इक्वल टू रेयर, वो तो एम्प्टी है, नहीं तो फ्रंट इज इक्वल टू -1, क्योंकि इनिशियली जब फ्रंट -1 है तब भी क्यू एम्प्टी है ना। सो हम ये दो कंडीशन से हम चेक कर पाते सर्कुलर क्यू एम्प्टी या नहीं बोल के। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू आर चेकिंग full and empty conditions
in circular queue. Okay, am I clear so far? सब लोग रेस्पॉन्स दे दीजिए, प्लीज गिव योर रेस्पॉन्स. Okay, now look at this question. Read the question and answer give me the answer. The top element of S after executing the above operations is dash. These are what you have to do. Read the question properly and give your answer. Hurry up. Hello, are you working on it? Let me solve. We have sequence A of elements. Following operations are performed on stack S and Q. Both are initially empty. So let me take the stack Q. Now push elements of A from A0 to A5 in that order. So A0, A5 in the order. So in this order I have pushed.
NQ elements from A0 to A5 in that order. So 1, 5, 7, 8, 9. So here will be front, rear will be here. Now, pop element from S, DQ element from Q, pop element from S, DQ element from Q, pop element from S, DQ element from Q, DQ element from Q and push the same element to S. So DQ and push. Now repeat this operation 3 times. That means DQ an element from Q and push. DQ an element, push. और DQ करने के लिए एलिमेंट्स है नहीं. ओके अच्छा और भी है ना, 1 मिनट रुको. वन 5 7 8 9 2 popped. Okay, now DQ an element and push it, repeat it 3 times. So 8 9 2 यहां आएगा. सो अब Q तो एम्प्टी हो चुका है, अब Q एम्प्टी हो चुका है. नाउ पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम S, pop an element from S. Now the top element after executing the above operations. So this is the top element. So the right answer is 8. The right answer is 8. Is this clear? Is this clear? Okay. Let's see one more question. Look at this. The fundamental operations in a double-ended queue. 1 मिनट रुको. ये डबल एंडेड क्यू थोड़ी देर के बाद करेंगे. ये कर लो बेटा. अच्छा ये भी डबल एंडेड क्यू का है. अच्छा 1 मिनट रुको. पहले डबल एंडेड क्यू क्या है? इसको हम कहते हैं डेक. मैंने क्या बोला था? डबल एंडेड क्यू. डबल एंडेड क्यू में इंसर्शन एंड डिलीशन इन डी क्यू, insertion and deletion can be done from both the ends. Can be performed from
both the ends. But हमेशा दो एंड से ऐसा नहीं. So it can be developed in two ways. It can be developed in two ways. How? One is input restricted deque. इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक, इसका मतलब है इंसर्शन सिर्फ रेयर एंड से ही कर पाते. डिलीशन आप रेयर एंड से कर सकते या फ्रंट एंड से कर सकते. सो दिस इज कॉल्ड इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक. और दूसरा होगा आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक. ये आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक क्या है? इंसर्शन आप रेयर एंड से कर पाओगे या फ्रंट एंड से कर पाओगे, लेकिन डिलीशन तो सिर्फ फ्रंट एंड से ही कर सकते. सिर्फ फ्रंट एंड से ही कर सकते. ओके. अब ये डेक में आप एम्प्टी या फुल कंडीशंस कैसा चेक कर पाते? इन डबल एंडेड Q is empty or not. How do you check? Same when front is equal to rear or front is equal to -1 से. सर्क्यूलर Q का कंडीशन से ही हम यहां भी चेक कर सकते हैं. और फुल वाला when front is equal to rear plus 1 मॉड साइज, क्योंकि डेक भी साइक्लिक वे में इंप्लीमेंट होना चाहिए. ओके. सो ये थोड़ा हम अच्छा सा ये करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा. देखो let deck size is 5, initially empty. इसका मतलब फ्रंट इज इक्वल टू -1, रेयर इज इक्वल टू -1. ओके. नाउ I would like to NQ from rear end. What value? 10. I would like to insert from rear end. What value? 10. So what will be front and what will be rear? Rear will be 0, front will be 0. रेयर 0, फ्रंट भी 0. Now NQ from front, ये अच्छा सा देख लेना. मैं फ्रंट से अभी इंसर्ट करना चाहता हूं.
फ्रंट से जब इंसर्ट करोगे, अगर फ्रंट ऑलरेडी 0 पे है तो हम फ्रंट को n-1 सेट करते, साइज -1 सेट करके इंसर्ट करते। सो NQ फ्रॉम फ्रंट से रेयर 0 पे फ्रंट 4 पे होगा, फ्रंट 4 पे होगा। अब मैं रेयर से इंसर्ट करना चाहता हूं, रेयर इंक्रीमेंट होगा, रेयर गेट्स इंक्रीमेंटेड, क्या 30 पे रेयर होगा और फ्रंट 4 पे होगा। अगर मैं फ्रंट से इंक्रीमेंट इंसर्ट करना चाहता हूं, तब फ्रंट डिक्रीमेंट होते, फ्रंट 3 होके 40 इंसर्ट होगा, रेयर 1 पे ही रहेगा। अगर मान लो मैं अब डिलीट करना चाहता हूं रेयर एंड से, क्या करना, 30 डिलीट होके रेयर 0 बन जाते। सो रेयर बिकम्स 0, फ्रंट तो 3 पे ही होगा। अगर मैं डिलीट करना चाहता हूं फ्रंट एंड से, अब 40 डिलीट होके फ्रंट इंक्रीमेंट होगा। सो रेयर 0 पे ही रहेगा, फ्रंट 4 होगा। आप देख लेना अच्छा सा क्या हो रहे। One more deletion I would like to do from front end. 20 डिलीट होके फ्रंट फिर से 20 डिलीट होके फ्रंट फिर से 0 होगा। मतलब जब फ्रंट 0 होता वो साइज -1 सेट करते, जब फ्रंट साइज -1 होता 0 को सेट कर रहे, क्योंकि वो साइक्लिक वे में जाना है। या यू कैन डू फ्रंट +1 मॉड साइज। ओके, नाउ आप फ्रंट से डिलीट करोगे या रेयर से डिलीट करोगे। आप 10 को डिलीट कर लेते, आप देखें तो रेयर फ्रंट सेम है। व्हेन रेयर इज इक्वल टू फ्रंट, वो तो एम्प्टी हो चुका है। सो आप कह सकते फ्रंट रेयर -1 फिर से सेट होते। सो लाइक दिस, अगर आप इंसर्ट करना चाहते रेयर एंड से, रेयर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। कैसा, साइक्लिक इंक्रीमेंट। डिलीट करना चाहते आप फ्रंट एंड से, फ्रंट को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा।
अगर मैं इंसर्शन फ्रंट से करना चाहता हूं, सो फ्रंट शुड बी डिक्रीमेंटेड प्रोवाइडेड इफ front is equal to 0, then front is set to size minus 1. Similarly, when I am deleting from rear end, rear gets deleted if rear is at 0, rear को भी size -1 कर ले। सो ये हैंडल करके हम इंसर्शन डिलीशन करना है। तो मैं आपको कंसोलिडेटेड दे दिया, ये आप याद रखना कब हम क्या करने वाला है। ओके, सो दिस टेबल विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग ऑपरेशंस ऑन डबल एंडेड क्यू। ओके, थोड़ा शांत से अगर आप देखोगे समझ में आएगा, क्योंकि हम दो एंड से कौन सा एंड से भी डिलीट कर पाते, इंसर्ट कर पाते, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन एलिमेंट होगा। बट शांत से आप आराम से बैठ के खुद पेन पेपर से मैं जैसा किया किए तो आपको आराम से समझ में आए। ओके, अब आप ये चेक करना, ये देख लेना। प्लीज लुक एट दिस प्रॉब्लम नाउ। Suppose you are given an implementation of a queue of integers. Operations that can be performed are given. Now consider the following function. What operation is performed by above function? Look at it. ये समझने के लिए आप कुछ क्यू एग्जाम्पल ले लो, कुछ ना कुछ क्यू एग्जाम्पल लेना बेटा। देखो, मैं 1 2 3 4 ऐसा एग्जाम्पल ले लिया। ओके, फ्रंट यहां पे है, रेयर यहां पे है। इफ क्यू इज नॉट एम्प्टी, I इज इक्वल टू डिलीट ऑफ क्यू। सो पहले I पे 1 आएगा, फिर से F को बुला रहे, F पे 2 आएगा, फिर से F को बुला रहे, F पे 3 आएगा, I पे 3 आएगा, फिर से F को बुला रहे, I पे 4 आएगा, F पे बुला रहे। अब Q एम्प्टी हो चुका है। सो अब हम इंसर्ट करते, मतलब ये पूरा डिलीट हो चुका। अब 4 को इंसर्ट करके
यहां आ रहे, 3 को इंसर्ट कर रहे, टू को इंसर्ट कर रहे, वन को इंसर्ट कर रहे, तो क्या हो गया, 1 2 3 4 वाला क्यू 4 3 2 1 हो गया. So it reverses the order of elements in the queue. Okay, and this question I am giving for your homework. Now let us move on to hashing or hash tables. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमको स्टैक, क्यू, अरे, लिंक्ड लिस्ट के साथ हैश टेबल भी हम ले सकते. सो पहले ये हैशिंग क्या है? You can tell that hashing is the process of mapping what? Mapping key to value. What is this value? Value is the slot or bucket number in the memory. अच्छा, मेमोरी में आप दिए सो की कहां सेव होना है, वो मेमोरी लोकेशन और दैट नंबर वेयर द की शुड बी स्टोर्ड, दैट इज कॉल्ड value. So the memory area or the memory region that stores keys based on hashing is said to be hash table. Is said to be hash table. So how do we map key to the slot? So to map keys to the values, hash function is used. ये हैश फंक्शन प्री डिफाइंड रहता, हमको मतलब हमको दिया जाता है. ये तो बहुत तरीका में बना सकते, मॉड्यूलो ऑपरेशन से, एक्सऑर ऑपरेशन से, राउंड ऑपरेशन से, बहुत ऑपरेशंस करके ये हैश फंक्शन कर पाते, बट हमको एग्जाम में ये हैश फंक्शन देते. तो ये हैश फंक्शन यूज करके की को हैश फंक्शन में सब्स्टिट्यूट किए तो आउटपुट वैल्यू आ जाएगा. मतलब अगर एक हैश फंक्शन को आप की इनपुट दिए, आपको आउटपुट क्या आएगा? वैल्यू आउटपुट आएगा. सो ये हैश फंक्शन से आप की वैल्यू पेयरिंग और मैपिंग कर लेते. ये प्रोसीजर को हम हैशिंग बोल के बोलते. लेकिन ये हैशिंग करते वक्त हमको एक इश्यू आ सकता है. क्या? सो व्हाइल हैशिंग, if more than one key maps to the
same value, then it is what we call it as, then it is said to be collision. It is said to be collision. So दो से ज्यादा कीज का वैल्यू सेम आए, मतलब दो कीज सेम मेमोरी स्लॉट पे सेव करना बोल के आए हैश फंक्शन से, तब हम बोल सकते कोलिजन अक्कर हुआ. सो टू रिजॉल्व collisions, we follow collision resolution techniques are used. Collision resolution techniques are followed. So what are those collision resolution techniques? These are classified into two types. One is called open hashing, other is called closed hashing. Open hashing, closed hashing. Open hashing technique is also known as chaining method. Closed hashing technique is also known as open addressing method. Under open addressing, we have again three. One is the linear probing, other is quadratic probing, and the other is double hashing. In the open hashing, we use or chaining method, linked list concept is what used. Linked lists are used to maintain all keys that maps to same slot. That maps to same slot. Example, for example, let us say you are given the hash function as, let's say, h of k is equal to k mod 7, and the keys are, let's say, 23, 30, 27, 34, 9, 16, 21. How we map these means? First, let us take the table with, let us say this is the table. With 7 slots, numbered from 0 to 6. Now, h of 23 is given as
23 modulus 7. So this will be 2. So this 2 will maintain this 23. H of 30, that is also giving 2. So एक्चुअली मैं ऐसा बोल सकता हूं, पहले वैल्यूज कैलकुलेट करने दो. H of 27 will give 6. H of 34 also gives 6. H of 9 2. H of 16 2. H of 21 0. That is 21 mod 7 0. So all the slots that are mapping to slot 2, so आपको ऐसा सेव होते 16 9 30 23 and all the slots that are mapping to 6 will be maintained like this. (34) 27 and 21 maps to 0th slot. So this is the hash table with chaining method. मतलब अगर आप यहां देखें तो कितना भी कीज एक स्लॉट को मैप हो रहे, सारे कीज को हम कैसा मेंटेन कर रहे, लिंक्ड लिस्ट से एक की को दूसरा की को लिंक करके ऐसा मेंटेन कर रहे. सो अगर आपके पास 100 की है तो 100 की सेम स्लॉट को आप मैप कर पाते, नो इश्यू. लेकिन इससे ड्रॉबैक क्या है, लिंक्ड लिस्ट का ड्रॉबैक ही है सीक्वेंशियल एक्सेस. अगर आपको कुछ की एक्सेस करना है तो सीक्वेंशियल वे में जाके एक के बाद एक ट्रैवर्स करके आपको एक्सेस करना पड़ेगा और मेमोरी वेस्ट हो रहे ये रेफरेंसेस के लिए. वैल्यूज स्टोर करने के लिए कैसे तो भी मेमोरी चाहिए, लेकिन ये लिंक मेंटेन करने के लिए भी यहां मेमोरी रिक्वायरमेंट है. ये तो एक्स्ट्रा मेमोरी वेस्टेज है, एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायरमेंट है. इसीलिए हम ये चेनिंग मेथड से ओपन एड्रेसिंग टेक्निक्स को जानते हैं. सो व्हाट आर दीज ओपन एड्रेसिंग टेक्निक्स? लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, डबल हैशिंग. इसमें h of k comma I is equal to k plus I mod n. This is the hash function. And quadratic probing में h of k comma I will be h dash of k plus I square whole mod n.
and double hashing में h of k comma I will be h1 of k plus I into h2 of k whole mod n. Here h1 of k is what? K mod n. h2 of k is k mod n dash. N dash will be less than n. This will be given. Matlab, I will be starting with 0 for each key. When collision occurs for any key on certain I value, then only I will be incremented. Here I is what we say probe. Probe means attempt. मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल यहां से ही सॉल्व करता हूं. देखो, सी दिस. Given the following input, and this is using chaining method. इससे क्या हो रहे? There are 10 slots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Nine six seven nine 1989 4199. When you apply mod 10, you will get 9. So here you will get 9679 1989 4199. सेम वे 1471 6171 का वैल्यू 1 आएगा. एंड 4322 का वैल्यू 2 आएगा. 1334 का वैल्यू 4 आएगा. 6173 का वैल्यू 3 आएगा. So it is given that these hash to the same value. Yes, correct. 1471 1671 hash to the same value. Correct. All elements hash to the same value? No. We have some other which hashing to different. Each hash to different value? No. These two hash to the same value, these three hash to the same value. So only 1 and 2 are correct. Right? अब लीनियर प्रोबिंग समझने के लिए ये एग्जाम्पल देखो. Hash table contains 10 buckets and uses linear probing to resolve collisions. The key values are integers to the hash function used is key mod 10. If the values so and so are inserted in the table, at what location would the key be inserted? Key 142.
So पहले take the table. There are 10 buckets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Numbering will be always starts with 0. Now h of 43. What is the linear probing hash function? H of k comma I is equal to k plus I mod n, where n is the table size. So h of 43 for any key I starts with 0, which is 43 plus 0 mod 10. 43 mod 10, that is 3. Is slot 3 free? Yes. So 43 is placed here. Now h of 165. Even for this key, I starts with 0. So this would be 165 plus 0 mod 10, that would be 5. Slot 5 free? Yes. So placed. H of 62 comma 0 will be 62 plus 0 mod 10, that will be 2. Slot 2 free. 123 comma 0. ध्यान से देखो बेटा, 123 mod 10 would be 3. Now collision occurred. Slot 3 already occupied. So whenever collision occurs, then only I value increments for that key. So अब हम 123 comma 1 कर लेते. So 123 plus 1 modulus 10. That is 124 mod 10 4. Slot 4 free? Yes. So place 123. Now finally 142. H of 142 comma 0. अरे for every key I value starts with 0. When collision occur for any I value, then only I gets incremented. So this will be 142 plus 0 mod 10. That would be 2. Slot 2 already occupied hai. So collision आ गया. So 142 on probe 1. ये तो 143 mod 10 3, ये भी कोलिजन है. 142 2, 144 mod 10 4 आ गया, ये भी कोलिजन है. सो ऐसा हम कोलिजन रिसॉल्व होने तक आई को बढ़ाते जाते. So on probe 4, you are getting the free slot for 142. So on which slot, on which value this key 142 is placed? 6. So ये तो सिंपल है. अगर आपको कुछ कोलिजन आए, नेक्स्ट फ्री स्लॉट ढूंढ लेना बस, बिना इंस्टेड यू अप्लाई दिस फार्मूला. अगर आपको 2 में कोलिजन आए, check is 3 free.
4 फ्री, 5 फ्री। अगर आपको 9 भी फुल हो गया, साइक्लिक वे में 0 फ्री है या नहीं देख लेना, ठीक है। सो लीनियर प्रोबिंग ऐसा काम करते। सेम वे आप ये फॉर्मूला में क्वाड्रेटिक प्रोबिंग दिए तो ये फॉर्मूला यूज करो 0 से। डबल हैशिंग में आपको H1 H2 दोनों देते, यहां H1 ऑफ K है K mod n, ओके। इसको हम कहते हैं प्राइमरी हैश फंक्शन, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी हैश फंक्शन। फाइन। सो आई एम गिविंग दिस फॉर योर होमवर्क। Solve it and do this. Consider a hash table with 9 slots. Hash function is K mod 9. Collisions are resolved by chaining. The following 9 keys are inserted in the same order. If so, the maximum, minimum and average chain lengths in the hash table are what? There are total 9 slots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 numbered from 0. Now the hash function is K mod 9. So H of 5 will be 5 mod 9, that will be 5. H of 28 सारे अप्लाई करेंगे। 28 mod 9 1. H of 19 1. H of 15 6. 20 2. 33 6. 12 mod 9 P. 17 8 10 mod 9 1. सो अब स्लॉट 1 में 10 आया, 19 आ गया, 28 आ गया। स्लॉट 2 में सिर्फ 20 आ गया। स्लॉट 3 में 12 आ गया। स्लॉट 6 में 33 आया। स्लॉट 5 में तो 5 ही आ गया। स्लॉट 6 में 33 आए, फिफ्टीन आ गया। एंड स्लॉट 8 में
17 आ चुका है। ओके, सो दिस इज व्हाट द मैपिंग। अब देखो चेन लेंथ देखेंगे। ये 0 स्लॉट तो कुछ की को मैप हुआ नहीं। स्लॉट 1 का 1 2 3 कीज मैप हो चुका है। स्लॉट 2 का 1, स्लॉट 3 का 1, स्लॉट 4 का 0, स्लॉट 5 का 1, 6 का 2, 7 का 0, 8 1. So these are the chain lengths. Now in this, what is the minimum chain length? 0. Maximum chain length 3. Average chain length. How do you find average? 0 plus 3 plus 1 plus 1 plus 0 plus 1 plus 2 plus 0 plus 1 by 9. ये तो 3 plus 2 5 plus 1 6 plus 2 8 plus 1 9 by 9 1. So minimum is 0, maximum is 3, average is 1. We want max min average. So 3 0 1. ऑप्शन ये इसका सही जवाब होगा। समझ गए बात? सो ऐसा हम हैशिंग में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते और ये मोड में हम सॉल्व करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आज हम क्यूज हैश टेबल्स डिस्कशन किए थे। आज के लिए इतना काफी है। मेरा दिए सो होमवर्क क्वेश्चंस आंसर्स आप ये टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करना। मंडे को वो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे लाइव क्लास में। ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन। होप यू understood all the concepts that we have discussed in today's class. Thank you everyone for your patient listening towards my lecture till the end throughout the class. Thank you everyone. Have a great weekend. See you on Monday again. Till then, have a great time. Take care. Bye bye. Jai Hind.